Good morning, everyone. Mahindra and Jio BP on Tuesday said they will be strengthening their existing partnership to launch fast EV charging network. The head of Mahindra e-SUV. NMDC has received MC approval for demerger on 6th October. They dated thing they have got it, but they have announced it yesterday only. So I think this is very positive. Now, see, the merger will happen very soon. So it is a special situation where NMDC valuation is based on mining, not on steel. So I think some upside the post demerger is possible in the stock. Suzlon secures order of 144.9 megawatt from Aditya Birla Group to supply 69 units of wind turbine generator with a rated capacity of 2.1 megawatt each project, and it will be completed by 2023, and it will be installed in two phases, one in Gujarat, one in Madhya Pradesh. ITD cementation has secured order worth 1,755 crores. With this, the company year till date has received 7,900 crores. And this 1,755 crores, two projects are for, one is for container terminal in Colombo, Sri Lanka. Other thing is in Dharma Port in Orissa for construction of berth and yard. And third one is civil work for coke oven project at Hazaria plant in Gujarat. JSW Energy, JSW New Energy has received letter of intent for 126 megawatt of Chandru HEP from government of Himachal Pradesh. It will be a build, operate and transfer scheme, BOOT, build, operate. It is for a 40 years operational life. Bajaj Auto buyback almost is complete is what I can understand. In a notification they have said they have bought 64 lakh shares. It is amounting to 2,499.97 crores, and they said 2,500. Hardly they have 3 lakh. I don't think any major impact will be there, but Bajaj, I think the 2,500 crores has been completed as of 10th October 2022. EC My Trip, they have announced a bonus of 1:1 and a stock split from 2 rupees to 1 rupees. So it is a corporate action. It doesn't have any major impact. Apartment sales in 7 cities. No, it is one of the highest in 7 years is what JLL India is saying. January to September 2022, they have sold almost 1,61,000 units, which is highest in 7 years. And even this quarter has been one of the best quarter is what they have said. So this is a bit positive for real estate stock. Till market holds 16,700 on the downside. I think we will bounce back, and the bounce back will be very sharp. Today we have major IT results coming, and in next 2 days banking results will start to flow. Yesterday in a weak market also, Federal Bank and City Union Bank were doing very good. We expect banking stock results to outperform market. Even selected chemical company, we expect them to post results. Yesterday, GM Breweries result came. It is not something we track, but very important is quarter-on-quarter basis. The sales has not improved, but their margins have improved. The reason being their raw material cost has come down. So the EBITDA margin last quarter was 15%. This quarter it is 22%. So that is a major change. So I think with raw material RM cost coming down,
Now, margin improvement is something in many companies we can see. So we have to be very stock specific. Be with stock which are outperforming the market or which are not correcting along with the market. That will be the first one to bounce back when this correction stops. But globally, there are many events which are disturbing. So one has to be very careful and do not average loss-making stock. No, it is better to avoid them for time period. We are in a very volatile period where there is a UK crisis, there is a European crisis, and there is interest rate going up, and Russia-Ukraine crisis also is not ending. With that, over to you, Hitendra. थैंक यू सर। इसको गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। कल हमने देखा महिंद्रा महिंद्रा जियो बीपी ने एक पार्टनरशिप किया है और वो लॉन्च करने वाले फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को सेटअप करने वाले। सो महिंद्रा इस पे जियो बीपी को हेल्प करने वाले। सेकेंडली देखेंगे एनएमडीसी को 6 अक्टूबर को एमसीएस अप्रूवल मिल गया था उनके डी मर्जर के लिए। बेसिकली ये 6 अक्टूबर को था, बट इसका जो इन्होंने कल एक्सचेंज पे नोटिफाई किया है। बेसिकली अगर ये वर्जर स्टोरी देखेंगे तो इनकी जो माइनिंग बिजनेस है वो सबसे मेन जिसका वैल्यूएशन सेक्टर है, और बाकी स्टील सेक्टर। तो वो पूरा जो उनका है प्लानिंग वो माइनिंग पे है। थर्ड हम देखेंगे सुजलॉन को एक ऑर्डर मिला है 144.9 मेगावाट्स का एबीसी आदित्य बिरला ग्रुप से, और वे टोटली विंड टर्बाइन सेटअप करेंगे 2.1 मेगावाट्स को 2023 में। और ये 2 फेज में, एक गुजरात में वो सेटअप करेंगे और एक मध्य प्रदेश में सेटअप करेंगे। आईटीडी सीमेंटेशन को 7,055 करोड़ का ऑर्डर मिला है। आईटीडी सीमेंटेशन के पास ईयर टिल डेट देखा जाए 7,900 करोड़ का ऑर्डर है। इनके पास टोटल 3 प्रोजेक्ट्स है, एक कोलंबो श्रीलंका में, एक धर्मा ओडिशा में, और एक हजीराबाद जो प्लेस है गुजरात में। सो वहाँ पे इनकी ये 3 प्रोजेक्ट्स है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है चंद्रू जो हिमाचल प्रदेश है उसके लिए हाईवे के लिए। बेसिकली बिल्ट ऑन एनर्जी ट्रांसफर प्रोजेक्ट रहेगा, 40 ईयर लाइसेंस के लिए इन्हें मिला है। बजाज ऑटो का लगता है बायबैक हमें लगता है पूरा हो चुका है। कल उन्होंने एक्सचेंज नोटिफिकेशन का उन्होंने अभी तक 24,24,997 करोड़ तक का बायबैक कर लिया है। ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ का साइज है, उसमें से सिर्फ 3 लाख बचा है, बाकी उन्हें सारा बायबैक कर चुके हैं। 64 लाख शेयर उन्होंने बायबैक किया एज ऑफ 10 अक्टूबर। इस बाई ट्रिप पे भी कॉर्पोरेट एक्शन है, वो एक बोनस इशू करने वाले 1:1 को और एक स्प्लिट करेंगे 2:1 में। सो कॉर्पोरेट एक्शन है, इसमें कोई एकदम बहुत ही हाल हमें बेनिफिट नहीं मिल सकता। अपार्टमेंट सेल्स देखी जाए तो 7 सिटीज में जेएलएल इंडिया का सबसे हाईएस्ट है जैन सितंबर मंथ में। टोटल 1.61 लाख यूनिट्स अभी तक सेल हो चुके हैं, 7 ईयर हाई पे रहा है। और देखा जाए तो बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट ये रहा है। मार्केट अगर हम देख रहे हैं तो जब तक 16,700 अभी तक जब तक होल्ड नहीं करेगा तो डाउन साइड में बाउंसेस हमें देखेंगे, बाउंसेस हमें शार्प में देखेंगे। और इसी सेक्टर में रहना है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक के साथ रहेंगे तो हमें लिए बहुत बेटर रहेगा। फेडरल बैंक, सिटी यूनियन बैंक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और ये अगर ये साइडवेज या कंसोलिडेट होता है तो उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। और जब भी यहाँ से बैंक निफ्टी में बाउंस आएगा सबसे पहले ये स्टॉक्स यहाँ से बाउंस करेंगे। चेन मेमोरी के भी कल रिजल्ट है, हालांकि हम स्टॉक को इतना ट्रैक नहीं करते हैं। क्वार्टर सेल्स में कोई हालांकि बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं देखा, बट हमें इनके मार्जिन इम्प्रूवमेंट से देखिए बेसिकली रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो हमें कट देखा गया उसके चलते मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखा। एबिटा देखा जाए तो 15% से राइज होकर 22% तक चला गया। और ओवरऑल हम देखेंगे अभी विप्रो की जो कंपनी प्रीव्यू ने कहा कि जो आज अनाउंस करेगी, और विप्रो की जो नंबर्स है टॉप लाइन ग्रोथ हमें लगता है 5% तक जा सकती है सीसी टर्म से। हाउएवर जो क्रॉस करेंसी इंपैक्ट रहेगा वो ट्यून ऑफ 100 बेसिस पॉइंट्स रह सकता है। ओवरऑल ग्रोथ है ये 4% रहेगी, और इंक्लूडिंग इसमें 1% इनऑर्गेनिक ग्रोथ रह सकती है। हमें लगता है एबिट मार्जिन भी ग्रो होगा 27 बेसिस पॉइंट से, क्योंकि क्वार्टर 14.6% रहेगा। इसमें इंप्रूवमेंट जो है यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू ग्रोथ के चलते रह सकता है। हम वॉच करेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री के लिए, उनका क्या आउटलुक रहेगा Q3 के लिए, और राज डील विंस क्या है और एट्रिशन ट्रेंड्स कैसा चल रहा है, और इनकी जो डिमांड्स अक्रॉस सारे वर्टिकल्स और माइक्रो चैलेंजेस कैसे ये कंपनी फेस कर रही है उसकी भी वेटेड वॉच रहेगा। सो हम एक डिटेल्ड रिलीज नोट करेंगे आफ्टर रिजल्ट्स के बाद।
HCL का भी आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमें लगता है रेवेन्यू जो ग्रो होगा 2.9% से क्वार्टर सीसी टर्म्स पे पार्शियली ऑफसेट हो जाएगा 20 बेसिस पॉइंट क्योंकि क्रॉस करेंसी के इम्पैक्ट चलते हैं। बट मार्जिन फ्रंट में हमें लगता है फोका जो एबिटा मार्जिन है वो ग्रो करेगा 59 बेसिस पॉइंट से, जो कि 17.6% रहेगा। तो वॉच करेंगे अगेन मैनेजमेंट कम्युनिटी के लिए, और उनकी जो आउटलुक है रिगार्डिंग प्रोडक्ट बिजनेस और जो ER&D बिजनेस के चलते हैं। और मैक्रो चैलेंजेस मेन रहेगा क्योंकि यूरोप का जो सिनेरियो है, डील पाइपलाइंस कैसी वहाँ पे है, और प्राइसिंग कैसे, किस प्राइसिंग से उन्हें मिल रहा है, और आर्टिशन ट्रेंड क्या है बेसिकली, और एमएनए प्लान्स क्या है। तो कंपनी ने आज कॉल शेड्यूल किया है पोस्ट रिजल्ट्स के बाद। इन्फोसिस पे भी एक नेगेटिव न्यूज बोल सकते हैं। कंपनी ने इन्फॉर्म किया है कि जो उनके प्रेसिडेंट रवि कुमार ऐसे उन्होंने रिजाइन कर दिया इमेजिंग इफेक्ट के साथ। वो कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे लास्ट 20 साल से, और उन्होंने रोल प्ले किया एज अ प्रेसिडेंट, और उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कंसल्टिंग इंजीनियरिंग और क्लाउड सर्विसेज को भी डेवलप करने में इन्फोसिस की मदद की है। एग्जैक्ट रीजन क्या है इनका रेजिग्नेशन का अभी तक अननोन है, बट हाउएवर हमें लगता है कि जो नए सीईओ आफ्टर प्रवीण राव इन्फोसिस लास्ट ईयर हुए हैं, तो उस पोस्ट को एड करेंगे। कि उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि वो परस्यू करना चाहते हैं नए बिजनेसेस जो कि आउटसाइड इन्फोसिस के हैं। सो हमें लगता है सडन रेजिग्नेशन एक नेगेटिव डेवलपमेंट दे सकता है। करंटली हमारी इसके ऊपर होल्ड रहेगा 59 के प्राइस चार्ट पे। चाइनीज इलेक्ट्रिक कार मेकर जो BYD है वो इंडिया में अब द लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करना चाहती है इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स में, और वे 40% मार्केट शेयर गेन करना चाहेगी 2030 तक। कंपनी ने लॉन्च किया है अपनी सेकंड प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी एटो 3 फॉर द इंडियन मार्केट। तो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया इसका प्राइस क्या रहेगा मॉडल के लिए। ये बिगेस्ट थ्रेट रह सकती है ईवी मेकर्स के लिए, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर। और इसकी डिलीवरीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी 23 से। IHCL ने भी अनाउंस किया है कि उन्होंने एक सिलेक्शन होटल अंजुना गोवा में स्टार्ट किया है। ये होटल फ्रेंचाइजी गिल्ड होटल से प्राइवेट लिमिटेड देंगे। इसके अंदर टोटल देखा जाए तो 49 रूम्स देंगे, और स्लेटेड जो है ये 23 अप्रैल तक ओपन हो सकती है। इसके साथ IHCL ने 12 और होटल्स गोवा में इंक्लूडिंग अंडर डेवलपमेंट है। सो ये जो साइनिंग हो रही है होटल की, कंपनी की स्ट्रैटेजी कंसोलिडेशन प्रोग्रेसेस के साथ की लॉजिंग मार्केट में रह सकती है। तो इनके पॉजिटिव न्यूज रहेगा IHCL के। करंटली हमारी इसकी होल्ड रेटिंग है 302 के प्राइस टारगेट के साथ। Technical and derivatives update. So in yesterday's session, we saw a very choppy market, and in the closing hour, index broke the 17,000 level. During the day, index made a low of 16,950, and it closed at 16,983 levels. So overall, we have been maintaining that index is likely to trade in the range. The lower side of the range was 16,900 to 16,800. On the higher side, 17,500. So with yesterday's session decline, now we are approached the lower side trading range. So most probably, this 16,900, 16,800 might see some buying at the lower side. Coming to the Bank Nifty also traded with the negative bias. The close was 38,712. Specifically, Axis Bank and Federal Bank were the two stocks which traded positively, and we believe that whenever the Bank Nifty takes supports, or some amount of buying comes in the Bank Nifty, Axis and Federal Bank will be the leader in the specific Bank Nifty. Overall, we continue to maintain the range bound move for the Bank Nifty within the 37,000 and 40,000, 3,000 points range. Overall, the net bias from the long-term perspective, Bank Nifty remains a very strong candidate. Lower side, again, the buying should come in. For the week, we maintain both Nifty and Bank Nifty to be a range-bound kind of trading session. Coming to FI data, FIs has again sold close to 10,000 contracts in the futures, and in net they are short by 1,20,000 contracts. The net long short ratio is at 14%. So this is at the lowest point. So maybe in the next couple of days, there's a high probability there might be some buying might be seen from the FI's point of view. Further, if you look at the derivatives data, Nifty futures have added the short position to the tune of 2.56%, which is the addition of 0.38 million shares. The advanced decline ratio was negative 184 on the negative side and the 14 on the gaining side.
Looking at the put call ratio, that also slipped from 1.05 to 0.72% in yesterday's session. The major additions in the call option front was seen at 17,200 strike price to the tune of 89.91 million shares, whereas on the put option was at 17,000 strike price, additions were seen at to 49.91 million shares. Coming to Bank Nifty saw the long unwinding in yesterday's session to the tune of 2.91%. And the major additions in the call option was seen at 39,000 strike plus at 27.29 million shares, and on the put option, 38,500 saw the additions of 15.1 million, 15.11 million shares. So a few long buildups which were seen in the yesterday's session was Axis Bank, Federal, and Alchem, whereas the short positions were seen in the Delta Corp, IndusInd Bank, and India Mart. In yesterday's session, the positive stocks were Bata, Axis, and Asian Paints, where the negative stocks were India Cement, McDowell, and Delta Corp. We have a cautious view at the lower side. We believe the buying might come in. So stock-specific buys are advised at current levels with the for the next 1 or 2 range-bound trading session. So that's the view for from the technical point of view. Over to Bhavesh sir for the fundamental. Hi, good morning, team. So first, Chinese steel company BYD is a EV automaker in China, has entered India, and they are eyeing a very aggressive market share of 40% in electric vehicles by 2020-30. And this is a big threat to Indian EV makers like Mahindra, Maruti, and Tata Motors. And they are going to start deliveries by Jan 2023. Second, on Indian Hotels. So Indian Hotels has announced signing of Selections Hotel in Anjuna, Goa. So hotel is a franchisee with Guild Hotels, and it will be a 49-room property, and slated to open by April 2023. So this is positive for Indian Hotels. As of now, we have a hold rating on the stock. Then there will be three results. There will be two results that will be coming out from IT side, Wipro and HCL. So in Wipro, we expect 5% QOQ growth, while in HCL, we are expecting 3% QOQ growth in CC terms. And on the margin front, we have for HCL, we are expecting that EBIT margin will expand by nearly 60 basis points to 17.6%. However, for Wipro, cross-currency impact will be 100 basis points and will lead to overall growth of 4% in EBIT. And lastly, Infosys, there is a slight negative development on Infosys. Company has informed that its president Ravi Kumar has resigned immediately. The reasons are unknown, but he was there with the company for 20 years, and his role as the president, he drove the digital transformation, consulting, engineer, cloud, and infra services. So exact reason is not known, but maybe this is slightly negative for the stock. We have a hold rating on the stock currently. So that's it from me. Over to you, retail team.